and welcome to Elections on My Plate, where our travels have brought us to the lovely city of Bhopal in the heart of Madhya Pradesh. The tranquil waters here only betray the political turbulence in the air. Most observers believe that Madhya Pradesh could see one of the most closely contested elections of 2023. Don't forget 2018, when the elections went down to the wire and the Congress just edged out the BJP. But 15 months later, the BJP was back in power, engineering defections in the Congress. Will 2023 then see a repeat of what happened 5 years ago? Or are the gentle winds of change blowing through Madhya Pradesh? What impact will the slew of promises that both sides are making have on the voter? Lots of questions to answer. Join me on Elections on My Plate. अरे वाह, अर्ली मॉर्निंग क्या खा रहे हो आप लोग? मैगी। आप खाओगे? मैगी, अर्ली मॉर्निंग मैगी। अरे वेरी गुड। क्या होगा चुनाव में? बीजेपी भी अच्छी सरकार है। हाँ, अच्छी काम की मामले में। हाँ, अगर पर्सनली कहूँ, हाँ। पर अभी कांग्रेस का इच्छा है सबकी, क्योंकि बदलती रहना चाहिए सरकार। आप बदलती चाहते हैं सरकार, हर 5 साल बदले? नहीं, हर 5 साल तो नहीं, अब काफी टाइम हो गया उनको। What's going to happen in the election? I hope BJP wins so that we can have some more opportunities of employment here. BJP couple. इट्स नॉट अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ। आई रिमेम्बर जब 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, हाँ। तो यहाँ पे रोड था, ना बिजली थी, ना पानी था। हाँ। तो यहाँ पे भोपाल में होते हुए सुबह 2 घंटे बिजली जाती तो शाम को 2 घंटे, कम से कम वो बेसिक्स तो ठीक हुए हैं। ओके, क्या होगा? कांटे की टक्कर या? की टक्कर तो है। एक तरफ कमलनाथ, एक तरफ अपोजिशन भी अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तो ज्यादा मजा आता है। एक तरफ कमलनाथ, दूसरी तरफ शिवराज। करेक्ट। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? यहाँ के लोग पसंद तो शिवराज जी को ही करते हैं। 2018 में जो रिजल्ट आया था वही रिजल्ट आएगा। होगा यही कि 132 आएगी, पर रह जाएगी 110। कह रहे हैं कि कांग्रेस की अगर आगे भी गई तो कांग्रेस के जो विधायक इस बार बीजेपी में नहीं जाएंगे। इस बार बिकाऊ नहीं, टिकाऊ लोगों को टिकट दिया हमने। सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोगों को फ्री का पैसा बांटना, ये समस्या है। ये समस्या दोनों पार्टियां फ्री। रिमेम्बर, मध्य प्रदेश है स्ल्यू ऑफ फ्री बीज। भोपाल की खासियत क्या? सुबह क्या खाना चाहिए? पोहा, जलेबी और कचौड़ी, समोसा, पोहा, जलेबी। आप लोग सुबह सुबह फिटनेस करते हैं या खाने के बारे में सोच रहे हैं? इसके बाद खाने जाएंगे। डॉक्टरों को ये समझ नहीं आ रहा हम लोगों का वेट कम क्यों नहीं हो रहा। कांग्रेस बीजेपी कौन आएगी? बीजेपी को देते हैं हम, तो बीजेपी। आप बीजेपी को देते हैं? क्यों देते हैं? शिवराज सिंह तो और अच्छा काम कर रहे हैं लाडली बहना योजना के लिए। तो 6 महीने पहले ही किया है, इतने सालों तक तो नहीं सोचा था। चुनाव के कारण। चुनाव के कारण। What will happen in elections? Congress. Congress will win? Yes. Sure. For sure. Last time also they won, but because of the controversy created by Mr. Sindhia, they lost. But this time you think that there is change in the air? 100% sure this time. 100% sure. ये क्या है एक्सरसाइज? इससे क्या होता है? हाँ? लाल ठोकू। ये ताली 3 तारीख को कौन बजाएगा? सर, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तो ये सब बीजेपी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 100 क्यों हटा दिए, 0 हटा दिए। कांग्रेस आएगी? 100% आएगी सर, कोई रोक नहीं सकता कांग्रेस। इस बार कोई कांग्रेस को रोक नहीं सकता है। लोग दिन में भी ख्वाब देखते हैं। लोग दिन में भी ख्वाब देखते हैं। कांग्रेस का ख्वाब दिन में भी देखते हैं। इट विल बी ए क्लोज कॉन्टेस्ट। श्योर? श्योर। 5 or 10 सीट्स हियर और देयर। दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। ये आप साइकिलिंग ट्राई कीजिए, ये ताली बजाने से कुछ होने वाला है। एक हाथ में बहुत दिनों से कंटिन्यू राज्य चल रहा है तो लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ऐसा मेरा सोचना है। लोगों का पता नहीं है, तो थोड़ा सा चेंज तो आना चाहिए। कंपटीशन रहता है तो हम लोगों को अच्छा रहता है। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में साहब बीजेपी आएगी। पर बीजेपी क्यों आएगी? 100%। यहाँ पे सब उन्होंने काम भी बहुत अच्छे से करवाए हैं। और कमलनाथ? कमलनाथ जी का क्या बताऊं साहब मैं। आप कमलनाथ जी तो के बारे में कोई इतना कोई खास उन्होंने तो कुछ किया नहीं था जो अपन उसके बारे में बोले था। Okay, our first political pit stop here in Madhya Pradesh is at the residence of Congress's chief ministerial face, Kamal Nath. The former chief minister is facing, in a way, a moment of truth. This is his 12th election. He's been in politics for more than 4 decades.
Can Kamal Nath win what many believe is his last fight and really make the transition from being seen as a resourceful backroom organizer stretching back to the Sanjay Gandhi days to now actually a mass leader and a face of his party? Let's find out and meet the Kamal of the Congress. Ah, my old friend, Congress is Kamal. Yes. How are you? Still going strong. Ah, well. So are you? We are the old war horses. Yeah, I remember touring with you over the days. I know, it must have been about 30 years ago that Yeah. we first traveled. What, this is your 12th election. Yeah, many elections I don't keep count now. But is this the last fight, if I may ask that? That, you know, What do you your mean the last fight? the last fight, meaning you've decided this is do or die. If you win this, you become chief minister. If you don't, you decide to retire. Well, it's not a question of retirement. For me, it's not been achievement. It's been fulfillment. 6 months ago, everyone said Congress is going to win Madhya Pradesh easily. Now they are saying kaante ki takkar hai, 50-50. What's changed? Nothing has changed. I see the voltage in the people. You must remember, after all the elections I've contested, you don't look at crowds, you don't look at content of speeches. You look at the voltage of the people. I see the voltage in the shops, how they run, how they greet you, and that is the signal. But the fact is, Shivraj Singh Chauhan seems to be making a comeback with the cash handouts. Ladli Behna scheme, 1,250 rupees to women who are from underprivileged families. Now he's saying, I'll increase it to 3,000. You've said 1,500. It suddenly seems that Shivraj Singh Chauhan's cash handouts to women voters, he believes could be the difference. Well, women voters are also realizing that after 18 years he thought of them, 5 months before the election. You mean to say women don't understand this? Their politics has changed. When I walk on the street, I hear people talking of Parivartan, but I also hear about people saying, "Nahi, Mama ji, bahut saal se hum unko pasand karte hain." That's okay, some will say that. It's a divided state. It's not a divided state. I think people in the state have made up their mind. I want to ask you this. I see the posters. I see you larger than life in all the posters. I don't even see the Gandhi family this time on the poster. I don't see your old friend Digvijay Singh ji on the posters. These are not It's only Kamal Nath. It's not posters put up by me. It's posters put up by people in the party. You say you're all united. What about you and Digvijay Singh? There was a video which came out saying, you know, which got you into trouble, saying that phad do Digvijay Singh ke kapde agar kuch People came from his area. Of course I said it. You said phad do Digvijay Singh ke Absolutely. kapde to all the dissidents. No. It's all rubbish. What I said on record. People from his place came to me saying, ye ho raha hai, ye mujhe ticket nahi de rahe. I said, to uske kapde phado, tum wahi se to ho. You disagreed to have an alliance with Samajwadi Party. You refused to have an India Alliance rally here in Bhopal. You don't want to have any alliance with Samajwadi Party. Akhilesh Yadav is very angry with Kamal Nath, saying this is arrogance, this is overconfidence. I had a very pleasant discussion with Akhilesh. It's not the number of seats. It's which seats he wanted. I have to make my party agree. But that would disturb my caste configuration in that district. That would help the BJP to win. So I said BJP will win. Both of us want the BJP to lose. You built a 101-foot statue of Hanuman. You claim you're in your constituency of Chhindwara. You claim to be a Hanuman Bhakt. You are saying you'll build a Sita Mandir in Sri Lanka. And you've got a Pujari Prakosht cell now in the Congress. You built a lot of Gaushalas when you were in Absolutely. when you were chief minister. I built 1,000 Gaushalas. My religion is not my politics. My politics is not religion. Why does it hurt the BJP? Why do they get a stomachache when I go to a temple? Why do they get a stomachache when I go for a prayer meeting? Have they taken the sole agency of religion? But you have a good relationship with Gautam I have a Adani. good relation with so many industries. I've been commerce minister. Of course I'll have good relationships. Do you believe that this is your revenge election? I don't believe it, but the people of the state believe it. They will take revenge. No, it still hurt you, the manner in which you were removed. Well, it was not a question of the way I was removed. It was a complete bargain. It was a buy and sell. I was chief minister. I could have also done a soda. I could have also done a deal, giving crores of rupees. But I said I do not want to sit on a chair which has been purchased. क्या है कमलनाथ का सीक्रेट क्या है राज क्या है कमलनाथ का कि you're staying so fit राज कहाँ है फिट है तो वो बाद में बताऊंगा हाँ घर बैठ के बताऊंगा कैसे फिट रहना I'm going to ask you a final comment that you want to give Shivraj Singh Chauhan here. He's watching you. What do you want to tell Shivraj Singh Mamaji? I want to tell him
You're a great actor. Go to Bombay, act in films, and bring glory to Madhya Pradesh. Kamal Nath ji says that Shivraj Singh Chauhan should become an actor. As you can see, there is still an undercurrent of that battle between Kamal Nath on one side and Shivraj Singh Chauhan on the other. We'll see whether Kamal blooms this time of the Congress or Kamal of the BJP. While the Congress has put all its eggs in a way in the Kamal Nath basket, the BJP in Madhya Pradesh is talking of a collective leadership, even though Shivraj Singh Chauhan has been a chief minister for almost 20 years. This time the BJP knows it's in a tough fight. It's even brought MPs from Delhi to contest in the election and is hoping that its ground level RSS Connect will help it. I'm going to, in a moment, meet one of the key ministers in the Shivraj Singh government, Vishwas Sarang. Let's go and find out how the BJP is fighting in Madhya Pradesh. Come with me. आप प्रचार में लगे हो, मैं अभी कमलनाथ जी से मिलकर आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं परिवर्तन की लहर है मध्य प्रदेश में। क्या कहेंगे, किस तरह का ये चुनाव, किस तरह का चुनाव आप मानते हैं? देखिए, ये चुनाव में कांग्रेस कहीं नहीं है। केवल दावा कर देने से राजनीति नहीं चलती, राजीव जी, आप जानते हैं। अगर बीजेपी जीतती है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखिए, ये तो पार्टी पहले ही क्लियर कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की नियत प्रक्रिया है, संसदीय बोर्ड में निश्चित होगा। इसको लेकर अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुख्य मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है जी, हम सब मिलकर 150 पार करके चुनाव में जाएंगे और मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पुनः बनेगी। कोई गुटबाजी नहीं है। शिवराज गुट, कोई गुटबाजी नहीं, वी.डी. शर्मा गुट, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट, कोई गुट नहीं है। 2018 में कांटे की टक्कर में कांग्रेस आगे गई थी, फिर आपने वो सरकार गिराई 15 महीने बाद। इस बार क्या फर्क देखते हैं 2018 और 23 के बीच? देखिए, 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज कांग्रेस से ज्यादा था। सीटें 3 सीटें 4 सीटें हमारी कम थी। हम चाहते तो उस समय भी दावा करके सरकार बना सकते थे, पर हमने उन्हें मौका दिया। आपने कांग्रेस को तोड़कर सरकार बनाई? हमने कांग्रेस को तोड़कर सरकार नहीं बनाई। 1-1.5 साल कांग्रेस की वादा खिलाफी के कारण कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो ये मानते थे कि हमने झूठे वादे किए थे और जनता के बीच हमारा चेहरा ठीक नहीं जा रहा, इसलिए उन्होंने स्व प्रेरणा से इस्तीफा दिया। तो कमलनाथ जी और शिवराज जी में सबसे बड़ा फर्क आप क्या देखते हैं? अरे सीधा फर्क है। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, कांग्रेस विनाश की बात करती है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, वो केवल झूठे वादे करते हैं। यू आर रेडी टू हैव अ कंपैरिजन 15 मंथ्स ऑफ कमलनाथ गवर्नमेंट वर्सेस बीजेपी के जो 3.5 या 18 साल के? देयर इज नो कंपैरिजन। नो कंपैरिजन? वो भ्रष्टतम सरकार थी। Now, perhaps there is no other state in which political godmen or religious gurus have as important an influence politically as they do here in Madhya Pradesh. Remember in the 2018 elections, Computer Baba, who got Minister of State rank and was wooed both by BJP and Congress? Well, 2023 may be no different. So which way are the Babas moving in 2023? As both main parties furiously battle for the Hindu vote bank. Let's find out and meet the Babas of Madhya Pradesh. महाकाल बाबा। महाकाल बाबा जी, अच्छा नहीं, यहाँ नहीं है, चलो देखते हैं कहाँ है। ओहो, आइए आइए, महाकाल बाबा जी हैं यार। आप तो बड़े यंग नजर आ रहे हैं मुझे लगा कोई सीनियर लोग होंगे। महाकाल बाबा जी, हर चुनाव में बाबाओं का प्रभाव होता है। पिछले चुनाव में कंप्यूटर बाबा हुआ करते थे,
अब बाबा बागेश्वर की बड़ी चर्चा होती है। धीरेन्द्र शास्त्री, ये बताइए हवा किस तरफ है? सब पार्टी आपको लुभा रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी, कहाँ जाएंगे आप? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो धर्म के तरफ रहेंगे। कांग्रेस लुभाए या बीजेपी लुभाए, संत जो है कि धर्म के तरफ रहे हैं और धर्म के तरफ ही रहेंगे। धर्म रक्षित ही देश रक्षित। सब अपने आप को कहते हैं कि हम भक्त हैं। एक हनुमान भक्त कहता है, एक राम भक्त कहता है। असली भक्त तो जो है कि जनता है, और जनता के नजर में जो भक्त है उसे जनता अभी आने वाले चुनाव में जवाब देगी। कि 15 महीने की सरकार में जो है कि माननीय कमलनाथ जी की जो सरकार थी, बीजेपी भी अच्छा कार्य करती है, परंतु उससे बेहतरीन कार्य जो है कि 15 महीने की सरकार में जो है कि कमलनाथ जी ने करके दिखाया। तो 18 साल की सरकार की अपेक्षा कहीं न कहीं से कमलनाथ जी बेहतरीन कार्य करने में सक्षम दिखे। आपको क्या लगता है किसने किया, कमलनाथ जी ने या नरेंद्र मोदी जी जो राम मंदिर का शुभारंभ करने जा रहे हैं जनवरी के महीने में? हम कमलनाथ जी का भी कोई वो नहीं करते, उन्होंने भी काम किए हैं, लेकिन अभी मोदी जी फिलहाल अच्छा काम कर रहे हैं देश में। ये कहते हैं मोदी जी ने अच्छा काम किया, आप कह रहे हैं कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में किया। मैं इसलिए कमलनाथ जी को प्रदेश की बात करता हूं, मोदी जी प्रदेश में नहीं है, मोदी जी देश में है। अगर प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने काम किया है तो शिवराज सिंह जी की बात किया जाए। ये भाई आप तो राजनीतिक बहस कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये तो मामा जी के खिलाफ निकले, ये तो बिल्कुल कमलनाथ जी के भक्त निकले। नहीं, भक्त तो संत लोग किसी के नहीं होते। अरे आप तो बन गए, ये तो कमलनाथ के भक्त बन गए, आप मोदी जी के भक्त बन गए। नहीं, भक्त कोई किसी के नहीं है। जो काम अच्छा करता है उसके लिए अच्छा वर्णन करते हैं, चाहे शिवराज कैसे भी हो, लेकिन उन्होंने प्रदेश में बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत सारे काम किए। मैंने सुना है कि ये ईडी से भी आपको बड़ी परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जितना ईडी के कंधे पे हाथ रख करके जो है कि विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का कार्य करती है, शायद उसका 25% भी अगर जो है कि देश के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करती तो आज हमारा देश स्वर्ण चिड़िया के रूप में जो कहा जाता है वो स्वर्ण चिड़िया के रूप में देखा जाता। कहीं न कहीं से मध्य प्रदेश में जो है भ्रष्टाचार की ही सरकार है, ये जनता जान चुकी है। आप मानते हैं क्या कि ये भ्रष्ट सरकार है? नहीं, लेकिन जो लोग आए हैं पैसे तो उन्होंने लिए हैं ना भाई, जो आए। तो ये लेन देन की सरकार के खिलाफ आप हैं कि कोई पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी, ये गलत है। ये गलत है, पार्टी अपने इसमें स्तंभ पे लेकिन आप समझते हैं मोदी जी ने विकास के लिए किया है काम? हाँ, इसमें देश में तो किया है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। नमस्कार, नमस्कार। लेट्स हिट द रोड। जय श्री महाकाल। टाइम फॉर गुलाब जामुन। यार गुलाब जामुन देना, बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। कैसे दिए? 15 रुपए पीस है। जय हनुमान। गरम है। Too good. गुलाब जामुन। Let's hit the road again. Now, among the key factors in this Madhya Pradesh election are first-time voters and women voters, which is why one of my first stops is here at the Bhopal School of Social Sciences to meet the young voters, all of them born well after Shivraj Singh Chauhan and Kamal Nath even entered politics. Remember also that this is a state where unemployment figures, at least 39 lakh people unemployed on government exchanges alone. Let's find out what the young of Bhopal want. How are you all? अच्छा ये बताओ, what do the young of Bhopal want, of Madhya Pradesh want? As we can see, government posts are empty, are vacant in the Madhya Pradesh state. So the government should do for more jobs, tender and more jobs. More jobs. Remember, as per in the assembly, only 21 people got jobs in 3 years as per official figures. There are very less entrepreneurship which is developed in Bhopal. We need that more private jobs also here so that we can stay in our country and work. आपको भोपाल पसंद है? Yes, sir. Huh? We love the city of lakes. How many of you feel job opportunities is the biggest thing you want? Raise your hands.
I hope Kamalnath and Shivraj Singh Chauhan are watching. Most young people want basic jobs. What is it that you want to tell your government, the Kamalnaths, the Shivraj Singh Chauhans? I want to tell that we can also should focus on women's safety. You don't feel safe in Bhopal? I thought this is a very safe city. I feel safe, that is not, but there should be a change in infrastructure that can provide more safety. So basically, I feel like the transportation facilities and the condition of our roads should be improving. You know, 20 years ago, जब मैं आपके स्टेट आता था, इतने बड़े गड्ढे हुआ करते थे. अब तो वो गड्ढे कम हो गए हैं. So गड्ढे कम हो गए, but size उनका उतना ही है आज भी. So every day we are seeing accidents, road accidents, and cause of that we are having a lot of people injured. How many of you want to leave Bhopal and go to other places for job? I want better opportunities and I would get it from some other cities such as Pune, Bangalore. Do you trust the politicians? जब ये promise करते हैं, आपको विश्वास है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे? No, sir. Why? Sir, they always claim, and after a month, after the elections, it's all forgotten. No politician inspires you? Narendra Modi, maybe. 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 How many of you will want to join politics one day? कोई है इसमें? Anybody wants to join politics? Not one? How many of you think your politicians are corrupt? Put your hands up. Honest answer. How many of you think कि भ्रष्टाचार है politics में? Anybody who think भ्रष्टाचार है, एक ही बंदा वहाँ, अरे धीरे धीरे हाथ ऊपर उठ रहे हैं. Sir, I feel because there are many issues that are highlighted and they make fake scenarios, they promises us, but there is always a huge gap between what they promises and what they actually does. What do you think of the Ladli Behna scheme? When elections are near, they start these schemes. तो आप बड़े चतुर हैं. सिर्फ और सिर्फ जब वोटिंग्स होने वाले उसके कुछ महीने पहले, ये 5 साल पहले जब हमने वोट करा उसके बाद क्यों नहीं शुरू करा? जब अभी वोटिंग्स हो रहे तब क्यों शुरू कर रहे? जस्ट टू गेन द ट्रस्ट ऑफ सच innocent people. How many of you are going to vote? All those who are going to vote, please raise your hands. कोई है जो वोटिंग नहीं करेगा? Because I don't think anybody here is trustable, all the parties. Because they promise and after they win the election, they'll forget their promises. I don't see any of the parties capable of providing things they promise. How many of you want younger politicians? Raise your hands. पर आप लोग खुद पॉलिटिक्स नहीं करेंगी, but you want younger politicians. ये क्या हो गया? Everyone thinks politicians are bad, they are corrupted, so I don't want that image. What is the best thing about being in Bhopal? Greenery of Bhopal, the fresh air we get, The city of lakes. Best thing is the peaceful environment and the brotherhood among the people of Bhopal. How many of you think India is going to win the World Cup here? Arre wah, definitely. Let's then turn to the woman voter. Because remember, that is the key factor being wooed by all parties here in Madhya Pradesh. You're watching Elections on My Plate. One of the defining features of this Madhya Pradesh campaign is the frenzied battle for the woman vote. Earlier this year, the Shivraj Singh Chauhan government announced the Ladli Behna scheme, under which more than 1.25 crore women now get 1,250 rupees allowance per month. The Congress is promising them 1,500 rupees. The Congress is also promising to bring LPG prices down to 500 rupees. What did Shivraj Singh Chauhan do? He said, I'm bringing it down to 450 rupees. How does this all play out, especially in rural Madhya Pradesh? I've traveled to Vidisha, 60 kilometers away from Bhopal, to try and find out. Come with me. अच्छा, आप बताइए, आपको 1250 रुपए मिल रहे हैं क्या? जी मिल रहे हैं. हर महीने मिलते हैं? हर महीने मिलते हैं. और गैस के दाम कितने हैं? गैस के दाम वो 1,130, 1,130. नहीं, पर सरकार तो 450 में आपको दे रही है ना? मिल रही है ना? नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, महंगाई है इसलिए भरवा नहीं पाया. शिवराज सिंह चौहान की सरकार कह रही है 450 रुपए में मिलेगा और कमलनाथ जी की सरकार कह रही है 500 रुपए में मिलेगा. मिला ही नहीं है. अभी तक मिला नहीं. आप क्या चाहते हैं कि सरकार इस तरह से ये लाडली बहना स्कीम आपको पसंद है या नहीं? पसंद है. महंगाई भी तो आएगी, पैसा दे रहे हैं तो क्या आएगा, तो महंगाई भी बढ़ रही है. कितने महीनों से गैस सिलेंडर 1100 रुपए पर आप दे रहे हैं? आप उज्ज्वला स्कीम में आपको मिल रहा था ना गैस सिलेंडर, तो आपने रिफिल किया कि नहीं?
नहीं, अभी भरवा ही नहीं है। अभी भरवाई नहीं? महंगाई के मारे भरवा ही नहीं पा रहा है। तो पहली बार मिला था? हाँ, जब से अभी भरवाया ही नहीं है। तो कैसे आप चूल्हा कैसे चलाते हैं? लकड़ी अभी तो आप वापस लकड़ी पर चले गए? कौन पसंद है, मामा जी पसंद है या कमलनाथ जी? कमलनाथ जी। आपके लिए? जी कमलनाथ। या आप वही कहेंगी जो आपके हस्बैंड कहते हैं? नहीं, हाँ, मैं तो अपने मन से कह रही हूँ। आप अपने मन से वोट देती है मैडम? श्योर? आप जो पति आप पर दबाव नहीं डाल रहे हैं? नहीं डाल रहे हैं। गैस है कि नहीं उज्ज्वला स्कीम में? नहीं मिला, हमको नहीं मिला। आपको गैस नहीं मिला? नहीं। क्यों? आपने कभी गैस, तो आप घर कैसे चलाती हैं? चूल्हे से जलता है। चूल्हे से ही जलता है? आप खुश है कि नहीं शिवराज चौहान सरकार से? नहीं सर, 1250 रुपए में गुजारा नहीं चलता है। गैस सिलेंडर ही 950 का भरा रहा है। नहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने तो अब 450 का दाम कर दिया है। नहीं, अभी कुछ नहीं है उसमें। आपको नहीं मिल रहा अभी नहीं तक? मिल रहा, नहीं। तो चुनाव में क्या होगा इस बार? चुनाव में तो वो तो बदलाव क्यों? क्योंकि जरूरी है बदलाव सर। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पब्लिक जनता पूरी परेशान है, त्रस्त है। शिवराज सिंह चौहान से खुश है कि नहीं? अरे कुछ नहीं है, खुश है। महंगाई बढ़ गई। कमलनाथ 1500 देगा कम से कम। को ये लाडली बहना में पैसा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। कितना मिल रहा है? उतना ही मिल रहा है, 600 रुपए। आपको 600 रुपए मिल रहा है लाडली बहना में या 1250? नहीं मिल रहा है। कितना मिल रहा है आपको? 600। और गैस का? गैस का भी नहीं मिल रहा। नहीं मिला है? गैस भी नहीं मिला। तो आप कैसे चलाती हैं घर? रोटी चूल्हे बनती हैं। अभी भी चूल्हे पे चलाती हैं? I hope someone is listening there. People are still not using gas cylinders under the Ujjwala scheme here. नमस्ते मैडम, ये हम पूछ रहे हैं कि आपको लाडली बहना में पैसे आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं ना। कितने आ रहे हैं? 1250। आप खुश हैं? हाँ खुश है। हाँ खुश है। और चूल्हा चला रही है कि नहीं घर में? चूल्हे पे ही बनता है। चूल्हे पे या गैस सिलेंडर आ गया है? गैस सिलेंडर वो ही है, मिला है बस। उज्ज्वला में मिला था ना? तो क्या अभी गैस सिलेंडर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही हैं आप? पैसे भी तो हैं भरने के लिए। सरकार कह रही है आपको, कमलनाथ जी कह रहे हैं मैं 500 रुपए में दूंगा, शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं अब 450 में आपको मिलेगा। भरवाएंगे 450 में। अगर 450 हो तो भरवाएंगे? हाँ भरवाएंगे ना, क्यों नहीं भरवाएंगे? 1100 में नहीं भरवाएंगे? नहीं भरवाएंगे। अच्छा, ठीक है। Now the good news for the Shivraj Singh Chauhan government is that with a few exceptions, most women are getting 1250 rupees under the Ladli Behna scheme. The bad news is most of them cannot afford still LPG gas cylinders because they say prices have gone too high. Mehngai. What happened then to the subsidized LPG and the Ujjwala scheme? I'm meeting Vivek, who is from Vidisha. He's a local journalist but also runs a gas agency. विवेक जी ये बताइए, मैं कई महिलाओं से मिला और सब कह रहे हैं वो चूल्हे पर चले गए हैं, गैस सिलेंडर का रिफिल नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है? सरकार ने तो सब्सिडाइज करके 450 रुपए में ऐलान किया है। ग्रामीण एरिया में और कई जगह गैस सिलेंडर लोग इसलिए नहीं भरवा पाते क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी तो दे रही है, लेकिन एट ए टाइम जब सिलेंडर उनके घर पहुंचता है तो उनको पूरा पेमेंट करना पड़ता है। जो पहले 1100 था, हाँ, अब 917 रुपए देना पड़ता है। उसके 3 से 4 दिन बाद सब्सिडी आती है उनके खाते में, तो उन लोगों को एट ए टाइम देने के लिए पेमेंट नहीं है उन लोगों के पास। लेकिन उज्ज्वला जो है, जब तक उनको डायरेक्ट 500 रुपए में एलपीजी नहीं मिलता तब तक उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ जी, देखिए बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो लोग सिलेंडर भरवा लेते हैं एट ए टाइम और सब्सिडी उनकी आ जाती है, लेकिन कई ऐसे परिवार भी हैं जो लोग एट ए टाइम सिलेंडर का पैसा नहीं दे पाते। ये एक बड़ी वजह है कि वो लोग गैस सिलेंडर का कम उपयोग करते हैं क्योंकि कम पैसे में उनको लकड़ी मिल जाती है। ये बताओ विवेक, आप गैस सिलेंडर कितने में आप बेचते हो? अभी 917 रुपए का सिलेंडर का चार्ज है। और 2-3 महीने पहले कितना था? उसके पहले 1100 रुपए सिलेंडर का चार्ज था, 1117 रुपए का। हाँ। आप देखिए लंबे समय से 1000 के ऊपर से सिलेंडर था, तो जैसे इलेक्शन आए, इलेक्शन के पहले ये 200 रुपए केंद्र सरकार ने कम करे हैं। The temperatures are rising here in Madhya Bharat, along with, of course, the rising political heat. So it's time, when you're on the highway, for a good Habeli Thali. Come with me, and then we'll travel to one of the battleground areas in this Madhya Pradesh election. You're watching Elections
on my plate. Let's go. Okay, थाली on the highway. हाँ, आपका थाली फेमस है मैंने सुना है जी। वेज थाली। वेज थाली और उसके साथ खीर भी मिलता है। खीर स्पेशल खीर है हमारी रजवाड़ी खीर। रजवाड़ी खीर जिसको हम बोलते हैं। राजवाड़े खीर क्या है उसमें स्पेशल? उसमें आप टेस्ट करेंगे आपको समझ में आएगा कि वो रबड़ी है वो तो एक हिसाब से। अरे वाह, ये हुई ना मेरी हाईवे थाली। Nothing like dal fry on the highway. Too good. Special kheer. अरे वाह, thank you. Too good. रेलगाड़ी, चुप 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 रेलगाड़ी। ट्रेन का मजा कुछ अलग। बहुत दिनों के बाद ट्रेन का सफर है, लेकिन जिंदगी का सफर जो है वो इसी तरह से चलता रहे। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। Elections on my plate, and our travels through Madhya Pradesh have brought us to the historic city of Gwalior, where there is a real battle within a battle taking place. Remember, in 2018, the Congress had swept the Gwalior-Chambal region, winning 26 of the 34 seats. But much water has flown under the Chambal since. In 2020, Jyotiraditya Scindia defected from the Congress along with 19 MLAs, brought down the Kamal Nath government by switching to the BJP. He's now a union minister in the Modi government, which is why the Gwalior-Chambal belt this time is a real prestige fight. Who's winning this big battle? Let's try and find out. सिंधिया जी ने सही किया कि नहीं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी की सरकार बना के? सिंधिया ने अपना भला किया। सिंधिया जी ने अपना भला किया। जनता का? जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता से कोई मतलब नहीं है। आपके हाथ में सरकार आती हुई छोड़ दी आपने। जनता ने किसी दूसरे को सरकार चुनने का मौका दिया, हाँ। तो उसको 5 साल तो चलवाना चाहिए ना, उसके बाद बदल देते आप। क्या सुविधा मिली? प्रशासन की सुविधा मिलती है पार्टी बदलने से। प्रशासन की क्यों? जिसकी झंडा होगा उसी का डंडा होगा। जिसी का झंडा होगा उसी का डंडा होगा। तो सरकार में ज्वाइन करके आपका फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। क्या ग्वालियर का फायदा हुआ? आज नहीं तो कल दिखेगा। कार्रवाई तो शुरू हुई, ये देख रहे हो सामने। पहले धूल दूषित पड़ा करती थी, हाँ। आज चमन बरस रहे हैं। बहुत बढ़िया किया, सही डिसीजन। सही डिसीजन। यस। अच्छा, आप मेरा फैन है? अरे वेरी गुड, मेरे ग्वालियर में फैन आ गए। अरे थैंक यू, थैंक यू। ये बताइए सिंधिया जी ने सही किया कि गलत किया? कांग्रेस से बीजेपी में जाकर मोदी सरकार से जुड़कर सही किया, गलत किया? नहीं, काम तो उन्होंने सही किया है। कांग्रेस में कोई वेटेज ही नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा? गलत क्यों है? विपक्ष मजबूत नहीं है इसलिए। विपक्ष मजबूत नहीं, उन्होंने रहना चाहिए था कांग्रेस में जी। सिंधिया जी तो छोड़ गए कांग्रेस, इस बार बीजेपी के उम्मीदवारों के साथ है। सही किया, गलत किया? गलत किया। गलत किया क्यों? तो धोखा नहीं देना चाहिए इंसान को, जनता को। आपने वोट दिया अपना कांग्रेस समझ के, और तुम पलट के बदल गए, उधर चले गए, बेईमानी करी, धोखा करा। गलत किया क्यों?
क्योंकि उनने अपने कुछ चंद लोगों के फायदे के लिए मतलब मध्य प्रदेश को बेच दिया। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने सही काम किया है। सही किया है। हाँ। और बीजेपी भी सही अपने काम कर रही है, अभी को सही काम करती जा रही है। सरकार में जनता की सुनवाई है कि नहीं? भाई साहब सरकार तक पहुँचे तो यहीं के लोग सब निपटाए, इतने कैसे काम चलेगा? चुनाव में किसका फूल चले? फूल ही खिलेगा सर, कमल का फूल ही खिलना है, वो तो खिलना है। वोट तो देंगी कि नहीं? वोट तो देंगे। तो किसको देंगे दीदी? ऐसे क्यों बताएं जान? अरे वाह, भाई के पान ग्वालियर वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। When you are in Gwalior, you have to have a sweet tooth, which is why before we hit the Scindia campaign trail, there's a sweet shop that you have to come with me. Chalo! Now you cannot come to Gwalior, call your program Elections on My Plate and not come here to Bahadura Sweets, where you get the Asli Desi Laddu, made even more famous because it was former Prime Minister and Gwalior-born Atal Bihari Vajpayee's favorite sweet. So let's find out the magic of the Laddu of Gwalior. कैसे हो विपुल जी? कितने सालों से आप ये कर रहे हैं भाई साहब? ये 95 साल के ऊपर हो गए। पिताजी ने शुरुआत की थी इसकी। और अटल जी भी यहाँ आते थे? जी काफी आते थे वो। ये लड्डू की खासियत क्या है विकास जी? शुद्ध देसी घी से और हार्ड कुक पे बनता है, अपना गैस का यूज नहीं के। देसी घी में, प्योर देसी घी। मेरे पेट का क्या होगा फिर? देखते हैं क्या है खासियत। किस पे बनाते हैं? अरे वाह, अच्छा यहाँ लड्डू बन रहे हैं। अरे आप लोग तो बड़े फिट हैं, लड्डू बनाते बनाते फिट हो गए। घी में बिल्कुल देसी घी। वाह, देसी घी के लड्डू। नाउ यू नो व्हाई माय मिडरिफ इज एक्सपेंडिंग। ये लड्डू बनाना सिखाओ। क्या करना चाहिए? इसको हाथ में ऐसे, बूंदी है, ये बूंदी के है, देसी घी के है। इसको इस तरह से मलो, तो इसको बेसिकली इस तरह से बनाते हैं। ओ हो, ठीक है ना? धीरे बन रहा है, ट्राई तो समय लगेगा। ओवरनाइट लड्डू कैसे बनाओ? राजदीप के लड्डू मेकर, क्या क्या करना पड़ता है लाइफ में। चुनाव में कौन लड्डू खाएगा? मोदी जी भी खाएंगे, राहुल भैया भी खाएंगे। आज तो लड्डू मेरे हाथ में है। एंजॉय द देसी घी लड्डू। लड्डू तैयार ना? अरे फर्स्ट क्लास। Here are my special Bahadura sweet laddus. I'm all set to hit the campaign trail and meet Gwalior Chambal's man of the moment, Jyotiraditya Scindia, facing a tough political challenge. Let's go, but first, laddu time. Enjoy. Too good. We've travelled some 75 kilometers out of Gwalior to here in Gohad in Bhind district. This is traditional Scindia country in the Gwalior Chambal region, an area dominated by the family over the years. The challenge for Jyotiraditya Scindia is to prove that he can win this region for the BJP like he did for the Congress, that he has leadership credentials that go beyond party labels. Let's find out what really Jyotiraditya Scindia sees his role in this 2023 elections. Congress made the charge that Jyotiraditya Scindia is a Gaddar. He defected and broke our government. So you've got to prove it to them that you're not a Gaddar, and you've got to prove to the BJP that you are a mass leader. That has already been proven. In 2018, an area that has never delivered more than 17 or 18 seats for the Congress delivered 26 seats for the Congress in the 2018 election. Then in 2022, you had a series of by-elections. The Congress could only hold on to 9. 19 went to the BJP. If the people had trust in the Congress, that scenario would not have happened in 2020.
according to Kamal Nath, when I interviewed him, he said one of the reasons why he believes Congress is winning because Congress wants to teach the betrayers a lesson, the gaddars a lesson. This is the problem with the thinking of the Congress. The Congress wants to teach. He says the people want to teach. No, the Congress wants to teach. No, you said first time you said the right thing. So you don't accept these opinion polls that say kaate ki takkar, Congress ahead. But every election is a kaante ki takkar. If you think that an election is not a kaante takkar, then you're set for your downfall. In your speech, I found you were focusing on Kamal Nath and to some extent on Digvijay Singh without naming him, of course, referring to him as Bantadhar. My sense is that you still hold Kamal Nath and Digvijay Singh responsible for your ouster from the Congress. There's still a sense of bitterness. Is he still the enemy? You only targeted them, not the Gandhi family or other leaders of the Congress. I have bitterness towards no one. No Kamal Nath, no Digvijay Singh, no bitterness for the way you had to leave the party. I meet Raj Sahab all the time in Parliament. I have no bitterness. There was an issue. You have moved on. But you were attacking Kamal Nath repeatedly in your speech here. If you run a government which is corruption-driven, rife with corruption, a government that backstabs the people of Madhya Pradesh, I will attack you. I didn't see you mention Rahul Gandhi or target the Gandhi family at all. The only time which you did in your speech today was when you mentioned Mohabbat ki dukaan and said actually they are nafrat ka saman. You have such a contradiction with people saying कि हम सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, and they're completely quiet on that. Not a word. If that's not the height of hypocrisy, then what is? A party that talks about the rights of OBC, rights of OBC, rights of OBC. And then, when the topic comes up and Rajdeep Sardesai asks me, what do you think about Akhilesh? I say, Akhilesh, meri baat karo. This is the way, this is the regard you have for an OBC leader. What is the big difference, therefore, that you see between Prime Minister Modi and Rahul Gandhi, between the Congress and the BJP? The first difference is that you are working in a system that believes in meritocracy. Can I just stop you for a moment? Because there will be those who will say, you're talking of meritocracy, you're a dynast. If Rahul Gandhi is a dynast, so is Jyotiraditya Scindia. What is the concept of Parivarvad? The concept of Parivarvad is when one family captures the right for anyone to be able to chart the future of that political party. It is only about the capturing of an organization for one particular family. Now you all are in a collective leadership. There's no certainty whether Shivraj Singh Chauhan will be the Chief Minister if the BJP wins. That's one part of it. Is he going to be the Chief Minister if the BJP wins? It is collective leadership in Madhya Pradesh, and it is collective leadership always within the BJP. Having said that, even within this collective leadership, and I'm saying this on record, minimum 70%, at the minimum, and I would go up to 80 to 90% of the credit of transforming Madhya Pradesh goes only to one person, and that person is Shivraj Singh Chauhan. But a sense of fatigue, a sense that people say, yaar, badlav chahiye. I've heard in Madhya Pradesh, I've heard those voices. 18-20 years a party has been in government. Some of those voices you will hear, but that's not an anti-incumbency. As an outsider, you can always see a glass is half full or a glass is half empty. But we've enjoyed this conversation with Jyotiraditya Scindia on the road from Bhind to Gwalior, and I must mention this, that the roads are much better. This used to take me a couple of hours 20 years ago, and the gaddhas are gone. So you can take, I don't know who can be given credit for that. We'll give both the Congress and the BJP government. Can we do that? Or Shivraj Singh, you're not going to give the centre any credit, Manmohan Singh's government and Modi's government for roads? No, because this is our state road. Okay. We'll accept that state roads have certainly improved in Madhya Pradesh. Whether other things have improved or not is a big question mark. Corruption is a huge question mark, and that we'll leave for perhaps Shivraj Singh Chauhan to answer. But Jyotiraditya Scindia, for taking the time out, thank you very much. Pleasure as always. Okay, we didn't quite get invited to the palace for a royal dinner, so we've done the next best thing. We've come back to the streets of Gwalior for the city's favorite snack. Certainly the favorite snack of former Prime Minister
Atal Bihari Vajpayee Amma ke Mangode, which is essentially these pakodas. मूंग के दाल के है ना, मूंग के दाल के पकोड़े। अटल जी यहाँ खुद आते थे जी सर, और जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद सर अम्मा को इनवाइट किया था, अम्मा का सम्मान किया था। देखते हैं क्या है ये खासियत आपके मंगोड़े में। तीखा नहीं है ना? स्पाइसी है सर। स्पाइसी है। चलो इंडियन ये भांडे ले जाते थे मिश्रा। अरे वाह, ये क्या डाल रहे हो? सर चाट मसाला। चाट मसाला के साथ आप मुझे बताइए, ये दुकान ऐसी है जहाँ अटल जी आते थे, लेकिन ये आप दुकान क्यों नहीं बनी है? सर मैं पढ़ा लिखा है न्यू और पढ़ा लिखा हूँ। सरकार ने क्या कहा कि दुकान देंगे या नहीं देंगे? तो शिवराज सिंह जी कह गए थे बैठने की परमिशन है, बस बैठने की परमिशन, बट दुकान बनाई है। बनाने की नहीं है सर। तो आप दुकान बनाना चाहेंगे कि नहीं? बनाना चाहेंगे ना? जो भी जीते 3rd of December, whoever wins, यार अटल जी's favorite snack place, at least make it a proper shop. Okay, the mangodes are really good. You must try them when you're in Gwalior. What is less clear is who's going to win Madhya Pradesh, a sprawling state, difficult to predict. On the one hand, you could argue there is anti-incumbency or dare I say fatigue against 20 years of BJP rule. On the other hand, Shivraj Singh Chauhan has intelligently targeted cash handouts, especially those aimed at women. We leave that to the voters of this state to decide. For now, I'm just going to enjoy the flavors of street food in Gwalior. From the entire team of Elections on My Plate, Vivek, Alok and Amit, thank you so much for joining me. Till we meet again, enjoy.